Okay, Assalamu alaikum students. So let's get started with May June 2023, paper 4, variant 1, IGCSE physics. Let's start with the first question. पहला सवाल देखते हैं भाई. Okay, so figure 1.1 shows a straight section of a river where water is flowing from right to left at a speed of 0.54 meters per second. अच्छा जी, water flow कर रहा है from right to left at a speed of 0.54. A swimmer starts at point P. अच्छा जी, swimmer start कर रहा है at point P and swims at a constant speed of 0.72 relative to the water and at right angles to the current. Okay, so what do we mean by that? Basically, the swimmer is moving at a speed of 0.72 meters per second like this. This is the speed of the swimmer. Okay. Determine relative to the river bank. Okay. Now, can you realize river bank? क्या है? River bank is horizontal. So you have to determine relative to the horizontal. Okay. Determine relative to the horizontal both the magnitude and the direction of the swimmer's velocity. How are we going to do that? First of all, तो आप current बना लो. The water current is moving at a velocity of what? 0.54 meters per second towards the left. And your swimmer is moving at a velocity of what? 0.72 meters per second. Now, before calculating the magnitude of the resultant velocity, beta, first of all, तो हम head to tail rule देखते हैं. Let's see whether the head to tail rule is getting satisfied. Can you realize this is the head of the vector? This is the tail of the vector. Head to tail rule तो satisfy हो रहा है. Can you make the resultant? Yes. बेटा ये आपका head है, ये आपका tail है. Can you make the resultant vector? Yes. From the head towards the tail, this is your resultant vector. ये आ गया आपका resultant vector. Can you calculate this resultant vector? Resultant square is equals to 0.72 square plus 0.54 square. You have applied Pythagoras theorem. This is 90-degree angle. Resultant vector comes out to be what? Under root 0.72 plus 0.54 ka whole square. Can you calculate this answer? Let's put it in the calculator, beta. 0.72 ka whole square plus 0.54 ka whole square taken under root. The answer for your resultant velocity comes out to be 0.9 meters per second is your resultant velocity. अच्छा जी, अब आपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी देनी है. यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ स्विमर्स वेलोसिटी relative to the river bank. आपने क्या निकालना है? You have to calculate this angle with the horizontal. क्योंकि आपकी रिवर बैंक क्या थी बेटा? अगर आप रियलाइज करो, your river bank is in the horizontal direction. So you have to calculate this angle theta with the horizontal or with the river bank. How will you do that? The side with the 90-degree is your perpendicular. The side with 90-degree and theta both is your base. Which ratio can you apply? Tan theta is equal to perpendicular over base. Theta is equal to tan inverse. Perpendicular क्या है बेटा? 0.72. Base क्या है? 0.54. Can you calculate your angle? Yes. Tan inverse 0.72, 0.54. Your angle comes out to be 53.1 degrees. IGCSE may you round your answers till two significant figures. 53 degrees is your answer. आगे बढ़ते हैं. After 1.5 minutes, the swimmer reaches point Q. अच्छा जी, टाइम आपको गिवन है. Time is 1.5 minutes. After 1.5 minutes, the swimmer reaches point Q. Okay. Calculate the distance between P and Q. How will you do that? Distance is equal to what? Speed into time. बेटा आपकी स्पीड क्या आ रही है? What is your speed coming out to be? 0.9. टाइम क्या आ रहा है? 1.5 minutes. 1.5 into convert minute into seconds. 60.
This comes out to be what? And ये क्या आ रहा है 0.9 into 1.5 into 60. This comes out to be 81 meters as your distance. Simple. Nothing complicated here. यहाँ पे लिख लो 81 meters is your distance. आगे बढ़ते हैं बेटा. When the swimmer is crossing the river, his action produces a constant forward force on his body. Explain why he moves at a constant speed. हमने बताना है why the swimmer is moving at a constant speed. बच्चे can you realize constant speed पे your forward force equal to the backward force. तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे? What can you say here? The forward force provided by the swimmer equals to the backward resistive force of water. बेटा जो स्विमर की फॉरवर्ड फोर्स है दैट इक्वल्स टू द बैकवर्ड रेजिस्टिव फोर्स ऑन द स्विमर. Resultant force becomes zero. Hence you are traveling at constant speed. So you can say the forward force the forward force is balanced by an equal force. Yeah, equal. You can write it like this. The forward force is balanced by an equal force. Yeah, equal force of resistance. Equal force of resistance in the backward direction. In the backward direction. बेटा फॉरवर्ड फोर्स बैलेंस आउट हो रही है बाय एन इक्वल force of resistance in the backward direction. Your resultant force becomes zero. Hence, the swimmer travels at constant speed. At constant speed. Simple, nothing crazy, very easy. Let's further move ahead. बेटा आगे बढ़ते हैं further. Figure 2.1 shows a motorcyclist accelerating along a straight horizontal section of the track. The motorcyclist and the motorcycle has a mass of 240 kg. Okay, so you have a mass of 240 kg. Perfect. On the straight horizontal section of the track, the motorcyclist accelerates from rest. Your initial velocity is zero. At an acceleration of this is your acceleration. Okay. The motorcyclist reaches the end of the straight section of the track in 5.3 seconds. आपके पास time भी आ गया. You have to calculate the final speed of the motorcyclist. Which formula will we apply? Acceleration is equal to final speed minus initial speed divided by time. अब आपने फाइनल स्पीड निकालनी है. आपने कौन सा वेरिएबल निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल लिटिल वी. हाउ विल यू डू दैट? एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करो. ए इंटू टाइम ब्रिंग यू टू द अदर साइड प्लस यू इज इक्वल टू योर फाइनल वेलोसिटी ऑफ वी. अच्छा जी. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो सिंस यू आर एट रेस्ट. एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 7.2. टाइम क्या है? 5.3. Can you calculate the final velocity? 7.2 into 5.3. Final velocity क्या आ रही है? 38.16 meters per second. But in IGCSE physics, we round our answers to two significant figures. 38 meters per second is your answer. Now you have to calculate the resultant force on the motorcyclist and the motorcycle on the straight section of the track. अच्छा जी, अब आपने resultant force निकालनी है. How will you calculate the resultant force? Resultant force is equals to mass into acceleration. बच्चे मास क्या है? 240. Acceleration क्या है? 7.2. Multiply कर दो. What does your answer comes out to be? 240 into 7.2. The answer comes out to be 1728 Newton. Rounded off to two significant figures, 1700 Newton comes out to be your answer. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं बेटा.
At the end of the straight section, the track remains horizontal but bends towards the right. हाँ ऐसा ही हो रहा है as shown in figure 2.1. देखो ट्रैक क्या कर रहा है, राइट की तरफ बेंड कर रहा है. Perfect. When the motorcyclist reaches the bend, she travels in a circular path at a constant speed. Velocity is a vector quantity. State how a vector quantity differs from a scalar quantity. Very easy. A vector quantity has a direction and magnitude, both magnitude, both. However, इसको वेक्टर लिख दो यहाँ पे. However, a scalar quantity only has a magnitude. Simple. Let's further move ahead. Describe what happens to the velocity of the motorcyclist as she travels around the bend at constant speed. बेटा जब भी आप बेंड के अराउंड ट्रैवल कर रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग? योर डायरेक्शन चेंजेस. जब भी आप बेंड के अराउंड ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी सर्कुलर पाथ के अराउंड ट्रैवल कर रहे हो, योर डायरेक्शन changes. As your direction changes, your velocity changes. So you can write here as the direction changes, velocity changes. Velocity changes. Perfect. आगे बढ़ते हैं बेटा. Explain why there must be a resultant force on the motorcyclist as she travels around the bend. एग्जामिनर अब हमसे ये पूछ रहा है बेटा कि जब ये मोटरसाइकिलिस्ट अराउंड द बेंड ट्रैवल कर रहा है, why should there be a resultant force? Now we have studied in theory कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, बेटा जब भी आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है टूवर्ड्स द सेंटर. बट हाउ विल यू प्रूव दिस कि रिजल्टेंट फोर्स क्यों एक्ट कर रही है? यू विल से यू विल से आप अपना आंसर इस तरह से स्टार्ट करो. यू विल से एज द velocity of the motorcyclist of the motorcyclist is changing, it causes acceleration. It causes acceleration. बेटा आपकी velocity of the motorcyclist change हो रही है. This causes acceleration. This acceleration, yeah, you can say since acceleration is proportional to resultant force. Since acceleration is proportional to resultant force, the acceleration of motor cyclist produces a resultant force. बेटा अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ा सा समझ लो. Have we studied this formula? Resultant force is equals to ma. Can you humbly realize that resultant force is directly proportional to acceleration? अगर आपकी एक्सेलरेशन की कोई सर्टेन वैल्यू है, रिजल्टेंट फोर्स की भी सर्टेन वैल्यू होगी. सिंस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट फोर्स, द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइक्लिस्ट produces a resultant force. And if you are very over efficient, you will further write that this resultant force is perpendicular to the motion of the motorcyclist. बेटा मोटरसाइकिलिस्ट की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, रिजल्टेंट फोर्स उससे परपेंडिकुलर होगा. यू कैन राइट दिस एज वेल. यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स इज perpendicular perpendicular to the motion
of the motorcyclist. Of the motorcyclist. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. Okay, so let's see this question. A rubber balloon is inflated with helium and sealed so that no helium escapes. This balloon is positioned immediately below the ceiling in a room. अच्छा जी. So let's draw the diagram. Let's say this is your ceiling of a room, and you have a balloon immediately below it like this. ये आपका balloon है. Heaters are switched on. ठीक है, heaters हमने switch on कर दिए हैं, and the temperature of the air in the room increases. Air का जो temperature है in the room that increases. Perfect. When the heaters are switched on, the temperature of the air immediately below the ceiling increases more quickly than the temperature of the air in the rest of the room. अच्छा जी. बेटा बोल ये रहा है एग्जामिनर कि जब आपके हीटर स्विच ऑन हो रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ द एयर इमीडिएटली बिलो द सीलिंग. जो टेम्परेचर ऑफ द एयर है यहाँ पे immediately below the ceiling, it increases much more quickly than the temperature of the air in the rest of the room. Explain why this happens. जब आपने हीटर स्विच ऑन किया है तो टेम्परेचर ऑफ एयर near the ceiling increases more quickly than the temperature of the air in the rest of the room. Explain why this is happening. ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? Why is this happening? How will you say that? किस तरह डिफाइन करोगे? You will say hotter, less dense air. Hotter, less dense air rises to the top. However, cooler, denser air, denser air sinks to the ground. आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जामिनर को ये बता दोगे कि भाई हॉट लेस डेंस एयर क्या कर रही है? राइज कर रही है. हाउएवर कूल मोर डेंस एयर इज सिंकिंग टू द ग्राउंड. दैट्स वाई अब इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? हाँ जी, इससे होगा क्या? जब कूलर एयर टॉप साइड पे राइज कर रही है द एयर इमीडिएटली बिलो द सीलिंग विल बी हॉटर ऑब्वियसली. बेटा जो हॉट एयर है वो राइज कर रही है ड्यू टू इट बीइंग लेस डेंस, और सीलिंग के नीचे सारी की सारी हॉट एयर ही आ जाएगी. हावेवर कूलर एयर फॉल्स टू द ग्राउंड, सिंक्स टू द ग्राउंड, तो बॉटम साइड पे सारी कूलर एयर आ जाएगी. सो यू विल से hot less dense air rises to the top, however cooler denser air sinks to the ground. This causes this causes hot less dense air to be accumulated immediately below the ceiling. Immediately below the ceiling. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. The temperature of the helium in the balloon increases as the rubber stretches. ठीक है यार, क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द हीलियम इंक्रीजेस. ठीक है, जैसे कि हमने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. परफेक्ट. What else is written? State what happens to the motion of the helium particles as the temperature increases. What will you say? As temperature increases, the kinetic energy, yeah, you can say the velocity of helium particles increase. This causes the kinetic energy of helium particles to increase. ये क्या cause करता है? Kinetic energy of helium particles to increase. Okay. As the rubber stretches and the volume of helium increases, the pressure of the helium remains constant. अच्छा जी,
आपका प्रेशर बेटा कांस्टेंट रह रहा है as the volume increases. Perfect. Explain in terms of particles of helium how the pressure of the helium remains constant. हमने बताना है how the pressure of the helium remains constant. Okay. First of all, you will say as temperature increases. जैसे जैसे temperature increase हो रहा है, what will happen? The velocity of particles increases. This causes the kinetic energy of particles to increase. अब आपने ये पूरा पूरा लिखना है, मैंने सिर्फ शॉर्ट हैंड में लिखा है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज. दिस रिजल्ट्स इन मोर frequent collisions and the force. अब देखो मैं किस तरह लिख रहा हूं. द फोर्स इंक्रीजेज मोमेंटरीली. बेटा एक मोमेंट के लिए या बहुत छोटे से मिली सेकेंड्स के लिए आपकी फोर्स इंक्रीज होगी. उसके बाद क्या होगा? as the volume increases as the volume increases, the collision frequency decreases and the force decrease. क्या कहोगे लास्ट में? क्या कहोगे? as the volume increases the collision frequency decreases, force decreases. You will say the effect of increase in temperature is balanced by the increase in volume, causing the pressure to be constant. बेटा जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ था, वो वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से वही प्रेशर डिक्रीज हो गया है. द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज बैलेंस्ड बाय द इंक्रीज इन वॉल्यूम, हेंस योर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम के इंक्रीज का इफेक्ट कैंसल आउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर का इफेक्ट, योर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट और सेम. आगे बढ़ते बेटा. A student investigates the efficiency of a filament lamp. Figure 4.1 shows the filament lamp with its bulb immersed in water in a beaker. Okay. The reading on the thermometer is this. Okay, this is your initial temperature. Perfect. Only the glass of the lamp is in contact with the water and the electrical connections are completely insulated. The lamp is switched on. Perfect. At the end of the experiment, the final temperature is this. This is your final temperature. Perfect. The specific heat capacity is this. You have to show the increase in internal energy. क्या करोगे? Q is equals to mc delta T. बेटा मास को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? किलोग्राम में. दिस बिकम 0.6 kg. 0.6 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 4200. चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 21.5 minus 19. Can you calculate the answer? The answer comes out to be 3600 joules. करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपका आंसर यही आएगा. इट्स अ श्योर शॉर्ट थिंग. आगे बढ़ते हैं. इन द एक्सपेरिमेंट द लैम्प इज स्विच्ड ऑन फॉर 500 सेकेंड. अच्छा जी, लैम्प को हमने स्विच ऑन किया हुआ है फॉर 500 सेकेंड्स. दिस इज योर टाइम. द पावर सप्लाई टू द फिलामेंट लैम्प इज दिस. दिस इज योर पावर input. The useful energy from the lamp is transferred as light. The energy that increases the temperature of the water is wasted energy. बेटा ये कौन सी एनर्जी हो गई? Wasted energy, because this is increasing the temperature of the water. You have to calculate the efficiency. अच्छा, efficiency का क्या फॉर्मूला होता था? Any genius in the chat? Efficiency is equals to useful energy output divided by total energy input. Okay. How will you calculate the total energy input? Total energy input कैसे निकालोगे बेटा? Power input into time. Power क्या है?
13 into टाइम क्या है 500। इसको ज़रा कैलकुलेट करो। 13 इंटू 500, ये हो गया 6500। अच्छा जी सर, 6500 तो हमारी टोटल एनर्जी इनपुट आ गई। यूजफुल एनर्जी आउटपुट कैसे निकालें? हाउ कैन आई कैलकुलेट द यूजफुल एनर्जी आउटपुट? You can take the total energy minus the wasted energy to calculate the useful energy. Total energy क्या है 6500, wasted energy क्या है 6300। This comes out to be what? 200 divided by 6500. What does your answer comes out to be? हाँ जी, this comes out to be 0.031. Correct to two significant figures. Also, you can give your efficiency का answer in percentages, just multiply it by 100, whatever you want to do. Decimal में भी दे सकते हो, percentages में भी दे सकते हो। 3.1% भी लिखते तो भी पूरे मार्क्स मिलते, 0.03 में लिखते तो भी पूरे मार्क्स मिलते। ओके, लेट्स फर्दर मूव अहेड। The efficiency of the lamp is less than the value determined in A part 2. Suggest one reason for this. अच्छा जी, efficiency of lamp less क्यों है than the value determined in A part 2? क्योंकि some heat energy या some energy या some thermal energy is supplied to the surrounding as well. Some thermal energy लिख लो, मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। Some thermal energy is transferred from water into air. From water into air. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा, let's move ahead. Now let's see this. Figure 5.1 shows a block ABCD made of glass that has a refractive index of 1.5. अच्छा जी, ABCD है, that has a refractive index of 1.5. The block has one curved side AB and three straight sides BC, CD and DA. BC है, CD है, DA है, एक curved side है AB. Okay. There are right angles at C and D. अच्छा, C and D पे right angles हैं. The curved side AB is 1/4 of the circumference of a circle that has its center at P. अच्छा जी, ये P क्या है? Center of the circle है. Perfect. A ray of monochromatic light enters the block through the curved surface AB and strike BC at point P. Okay. Some light emerges into air and some is reflected. Okay. P पे आप जो है वो hit कर रहे हो. Okay. Some light emerges into the air and some light is reflected. Okay, you can see here. कुछ light जो है air में जा रही है like this, and some light goes reflected back. ठीक हो गया, nothing complicated here. State what is meant by monochromatic. Monochromatic का क्या मतलब होता है? Light of a single frequency is known as monochromatic. Light of a single frequency is known as monochromatic. Explain why the ray of light does not change the direction when it enters the block through side AB. अच्छा जी, जब आप साइड AB से एंटर कर रहे हो तो why is the direction of light not changing? Can you realize this light ray? ये light ray क्या कर रही है? Is making a 90-degree angle with side AB. Light ray is making a 90-degree angle with the side AB. तो आप क्या कहोगे? The incident ray travels along the normal. Incident ray क्या कर रही है? Travels along the normal. Hence, no refraction occurs. No refraction occurs. Okay. उसके आगे क्या लिखा हुआ है? Show that the critical angle of the glass is this. ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बने। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? n इज इक्वल टू 1/sin of c। n क्या है बेटा? 1.5 इज इक्वल टू 1/sin of c। Sin of c is equal to 1/1.5. Can you calculate the critical angle? Critical angle is equal to sin inverse 1/1.5. Your angle comes out to be 42 degrees. Simple.
कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आगे बढ़ते। Figure 5.1 shows the angle between the ray of light and line AP is theta, where line AP is at right angles to BC. Okay. Angle theta increases to 45 degrees. Oh, ये एंगल थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया है बच्चे? 45 डिग्रीज। और ये क्या चीज है? दिस इज योर नॉर्मल। क्या आप रियलाइज कर सकते हो ये लाइन एपी क्या है? नॉर्मल। इफ दिस एंगल थीटा इज 45 डिग्रीज तो इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द लाइट दैट स्ट्राइक्स पी। पी पे क्या हो रहा है एज द लाइट स्ट्राइक्स इट? व्हाट विल यू से? यू विल से एज angle of incidence. Angle of incidence is greater than the critical angle. What will happen as angle of incidence is greater than the critical angle? What will happen? Total internal reflection occurs. Perfect. Okay, ji, let's read out this question. When angle theta is 45 degree, the reflected light strikes CD. Describe what happens when this reflected light ray strikes CD. अब पहले तो इस सवाल को समझो हो क्या रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि थीटा 45 डिग्री है और उसकी वजह से आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ इस तरह से सीडी पे हिट कर रही है। ठीक है। Your angle of incidence is 45, angle of reflection is 45, and your reflected light hits CD. If your reflected light hits CD, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 45 degrees. You will have a reflected ray like this. बेटा देखो, अगर आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट करके साइड सीडी पे इंसिडेंट हो रही है, इट विल ऑल्सो हिट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी फिर से। सो यू विल राइट हियर लाइक दिस एज द लाइट strikes CD, angle of incidence is 45 degrees greater than critical angle. Hence, light reflects back. Reflects back या total internal reflection हो जाती है। ठीक है। देखो हुआ क्या है। When theta is equal to 45 degree, the reflected light strikes CD. जब थीटा 45 है बच्चे तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या कर रहे हैं? सीडी को स्ट्राइक कर रहे हैं। ड्रॉ अ नॉर्मल हेयर, दिस इज 45। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45, बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 45 है तो रिफ्लेक्शन भी 45 हो जाएगा। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेट्स मूव अहेड। अ मोबाइल फोन, सेल फोन network uses microwaves of this frequency, frequency आ गई। The speed of microwave is this. You have to calculate the wavelength. किस तरह निकालोगे? V is equals to f lambda. V क्या है बेटा? 3 into 10 raised to the power of 8. Frequency क्या है? 1.9. 10 raised to the power of 9. Lambda. Can you calculate the wavelength? Yes. 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 1.9. 10 raised to the power of 9. Can you calculate the wavelength? हाँ जी, wavelength निकाल सकते हो। 3 into 10 raised to the power of 8 divided by 1.9. 10 raised to the power of 9. What does your answer comes out to be? Wavelength का आंसर क्या आ गया? 0.157 meters. If I round it off till two significant figures, 0.16 meters is your wavelength का answer. Simple as that. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं। State two reasons why microwaves are used for mobile phone signals. हमने बताने हैं दो reasons why microwaves are used for mobile phone signals. Why? Because microwaves are what?
Microwaves can penetrate through walls, and microwaves only need short antennas. तो लिख लो, microwaves need short antennas. और दूसरी बात क्या लिखोगे बेटा? माइक्रोवेव्स नीड शॉर्ट एंटेनाज, और दूसरी बात क्या लिखोगे? माइक्रोवेव्स कैन पेनेट्रेट थ्रू वॉल्स। इजी। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा जी। All mobile cell phone networks uses digital signal to communicate with the phone. Describe with the aid of a diagram how a digital signal differ from an analog signal not in syllabus. ये syllabus में ही नहीं है अब. Okay. Say two advantages. This is also not in syllabus. Let's move ahead. Okay. Figure 7.1 shows a circuit that contains a battery, a switch, a voltmeter, and three 40 ohm resistors R1, R2, and R3. Okay. The switch is open and resistor R1 and R2 form a potential divider. Okay. Describe what is meant by a potential divider. बेटा potential divider का मतलब क्या होता है? हाँ जी. Potential divider basically splits the EMF of a power source between different resistors या between two resistors. The EMF is split based on the resistance of the resistors. इसको लिख लो. A potential divider. चलो अच्छी सी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ. You will remember it till eternity. A potential divider divides the EMF of the battery. Potential divider क्या करता है? Divides the EMF of the battery into what? EMF of the battery को क्या करता है? The potential divider splits here, divides the EMF of the battery, EMF of the battery into the separate resistors, yeah, into two resistors based on the resistance of the resistors. Potential dividers circuits क्या करते हैं? They divide the EMF of the battery into the two resistors, yeah, into the two components. Yeah, they split the voltage, yeah, EMF into different components, different resistors based on the resistance of the resistors. सर इसका मतलब आप थोड़ा सा उर्दू में समझाएंगे? यस. पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट ये करता है कि वोल्टेज को डिवाइड करता है अमंग रेजिस्टर्स. जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होगी उसको वोल्टेज भी हाई मिलेगा. जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लो होगी उसको वोल्टेज भी लो मिलेगा. दिस इज हाउ अ पोटेंशियल डिवाइडर वर्क्स. आगे बढ़ते हैं. द रीडिंग ऑन द voltmeter is 7.5. Calculate the EMF of the battery. अच्छा जी. बेटा यहाँ पे वोल्ट मीटर पे आपकी रीडिंग क्या आ रही है? 7.5 वोल्ट्स. ओके. कैन यू ऑल्सो रियलाइज कि आपका स्विच क्या है? आपका स्विच ओपन है. सो हाउ विल योर सर्किट लुक लाइक? बेटा सर्किट किस तरह से लगेगा? समवॉट लाइक दिस. अगर इस रेजिस्टर पे 7.5 वोल्ट है बेटा, R2 पे भी 7.5 वोल्ट होगा. बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम रेजिस्टेंस. R1 क्या है? 40 ohms. R2 भी क्या है? 40 ohms. R1 अगर 40 ohms है तो उसका वोल्टेज 7.5 है. R2 40 ohms है तो उसका वोल्टेज भी 7.5 होगा. EMF क्या हो जाएगा? दोनों का सम. That is 15. 7.5 plus 7.5 is equals to 15 volts. The switch is now closed. Calculate the resistance of the complete circuit. अच्छा जी. स्विच को अब आपने क्लोज कर दिया. अच्छा, if you close the switch, how will your circuit now look like? अब अगर आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो ये 40 ओम वाला रेजिस्टर और ये 40 ओम वाला रेजिस्टर पैरेलल में आ गए. कैन यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल? यप. 1/40 प्लस 1/40 क्या हो जाएगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/RP. 2/40. RP किसके इक्वल आ जाएगा? 40/2, दैट इज 20 ohms. हाउ कैन यू मेक दिस सर्किट?
ये आपकी बैटरी आ गई, ये आपका रेजिस्टर आ गया ऑफ 40 ohms, एंड यू हैव दिस रेजिस्टर पैरेलल। दो रेजिस्टर की जगह अब आप क्या कर सकते हो, 20 ohm का रेजिस्टर लगा दो, बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है, 20 ohm। दिस इज योर वोल्ट मीटर कनेक्टेड हियर। अच्छा जी, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, 40 + 20, दैट इज 60 ohms। परफेक्ट। कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा जी, अब आपने रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर निकालनी है व्हेन द स्विच is closed, the EMF of the battery is 15 volts. So basically, you have to calculate what? You have to calculate the voltage across the 40 ohm resistor. अब एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो जिंदगी भर याद रखना, और फिर फॉर्मूला की डेरिवेशन भी दिखा दूंगा। वोल्टेज डिवाइडर रूल। बेटा जब भी आपने किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, जैसे 40 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकालना है, व्हाट विल आई डू, आई विल टेक द रेजिस्टेंस ऑफ द 40 ओम रेजिस्टर डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ। मैंने 40 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द 40 ओम रेजिस्टर, 40। टोटल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 40 + 20, दैट इज 60। टोटल वोल्टेज क्या है, 15, 1, 4, 1, 10। The voltage across the 40 ohm resistor is 10 volts. You can write it here. अब अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाना, इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हाट कैन यू डू, आप रेशियो मेथड लगा लो। इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई रेशियो मेथड। कैन यू रियलाइज टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 40 + 20, दैट इज 60 ओम। 60 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 15। तो ये 40 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, एक्स। अप्लाई रेशियो मेथड, 40 × 15 / 60, 2, 3, 1, 5, 10 volts is your voltage across the voltmeter। सिंपल। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ लेट्स जूम इन अ बिट। अच्छा, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू अ टाउन इज ट्रांसमिटेड यूजिंग अ हाई वोल्टेज केबल। ओके, a transformer in the town has a soft iron core. Okay. Explain the principle of operation of a simple iron core transformer। अच्छा जी, हमने बताना है ट्रांसफॉर्मर किस तरह वर्क करता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू विल से, एन ऑल्टरनेटिंग करंट, एन ऑल्टरनेटिंग current in the primary coil, current in the primary coil cuts with, yeah, you can say an alternating current in the primary coil generates a changing magnetic field in the primary coil, generates a changing magnetic field in the primary coil। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, this changing magnetic field, this changing magnetic field cuts with the secondary coil। बेटा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, कट्स विद द सेकेंडरी coil, what will further happen, this changing magnetic field cuts with the secondary coil, what will further happen, an induced EMF or an alternating current is generated in the primary coil। You will say an induced EMF is generated इन द सेकेंडरी कॉइल। बेटा इसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे इफ यू राइट दिस इंटायर स्टोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल,
This alternating current in the primary coil generates a changing magnetic field in the primary coil. This changing magnetic field cuts with the secondary coil. As the changing magnetic field cuts with the secondary coil, EMF is generated in the secondary coil. Simple. The transformer steps the voltage down from this to this. This is your primary voltage. This is your secondary voltage. There are 450 turns on the secondary coil. ये number of turns है on the secondary coil. Calculate the number of turns on the primary coil. आपने number of turns on the primary coil निकालने. How will you do that? VP over VS is equals to NP over NS. ठीक है? Voltage primary divided by voltage secondary is equals to the number of turns on the primary divided by the number of turns on the secondary. वोल्टेज प्राइमरी क्या है बेटा 22000। वोल्टेज सेकेंडरी क्या है 33000। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी हमें नहीं पता। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी 450। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी? यप 22000 into 450 divided by 33,000। What are your number of turns on the primary coil? Number of turns on the primary coil निकाल सकते हो बेटा। 450 divided by 33, the number of turns on the primary coil comes out to be 3000। Simple, nothing complicated here। कोई मसला है तो यहाँ पे बता दो, I will clear it out instantly। आगे बढ़े बेटा। The electrical power transferred to the transformer by high voltage is this is your power। You have to calculate the current in the primary coil। आप क्या करोगे? Power in the primary coil is equals to current in the primary coil multiplied by the voltage in the primary coil। Power in the primary coil क्या है 77 into 10 raised to the power of 6 mega। You have to calculate current in the primary coil। Voltage in the primary coil क्या है 2200। Can you calculate the current in the primary coil? Easy peasy। कैलकुलेट करो करंट इन द प्राइमरी कॉइल, निकालो जरा क्या आता है आंसर। 22000। This comes out to be what? 350 amperes is your current। Simple। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, चलो लेट्स मूव फर्दर इन द पेपर। Figure 9.1 represents all the particles in a neutral atom of a radioactive isotope X1। Always remember, in a neutral atom, proton number is equal to the electron number, okay? Calculate the number of neutrons in this atom and explain how the answer is obtained। बच्चे दिस इज अ न्यूट्रल एटम ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5। देर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स भी कितने होने चाहिए 5। बेटा इन ग्रे या ब्लैक सर्कल्स में से 5 सर्कल्स कौन से हैं? देखो हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। क्या आपको याद है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब हमें पता है प्रोटॉन्स 5 होंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 5 थे। कौन से सर्कल्स 5 है? ये वाइट वाले सर्कल जो है वो 5 है। तो प्रोटॉन्स आर बेसिकली वाइट, द रिमेनिंग वंस न्यूट्रॉन इज ग्रे। ग्रे किलो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। न्यूट्रॉन ग्रे वंस आर 7। तो यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 7। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे बेटा? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? यू विल से सिंस द atom is neutral, number of protons is equals to the number of electron। ठीक है, फिर आप कहोगे number of protons is equals to 5। the white circles in the center। न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स is equals to 7, that is gray circles। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द आइसोटोप X1 is a beta emitter that decays to a stable isotope X2। Explain how a nucleus of X2 differs from a nucleus of X1। X2 X1 से किस तरह डिफर कर रहा है? तो बेटा X1 में बीटा पार्टिकल एमिशन हो रही है एंड इट बिकम्स X2।
Whenever beta particle emission happens, what will happen to your nucleus? x2 has, या एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं? बेटा जिस भी पार्टिकल में बीटा पार्टिकल एमिशन होती है क्या होता है? x2 हैज मोर, या इस तरह कह लो x2 हैज वन मोर प्रोटॉन एंड वन लेस न्यूट्रॉन कंपेयर्ड टू x1। x2 के पास क्या है बेटा? वन मोर प्रोटॉन and one less neutron compared to x1. Suggests why isotope x2 is more stable whereas isotope x1 is not stable. What will you say? x1 has more number of neutrons, और या ये कह सकते हो कि x2 has excess neutrons. ठीक है, you can say x1 has excess neutrons. Simple. आगे बढ़ते हैं. The half-life of x1 is 20 millisecond. Describe the term half-life. Half-life क्या होती है? Time taken for the number of radioactive nuclei to half. You will say time taken for the number of radioactive nuclei to half. Suggest one reason why isotopes with very short half-lives are especially hazardous. भाई आपने एक रीजन बताना है वाई आइसोटोप्स विद वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ आर हेजिडियस. क्योंकि वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ के साथ क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम. इफ यू हैव अ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम. इन वेरी शॉर्ट टाइम. सिंपल. आगे बढ़ते हैं बेटा. क्या हुआ? चलो, let's move forward to the next question. Pluto is a dwarf planet. Figure 10.1 shows the direction of Pluto as it follows the elliptical orbit around the Sun. Okay. Point X is in the orbit closest to the Sun and point Y is furthest away from the Sun. अच्छा जी, point Y furthest away from the Sun है, X closest to the Sun है. Okay, closest to the Sun. और ये आगे आपका furthest away from the Sun. Okay. The speed of Pluto varies as it orbits the Sun. Explain how the speed of Pluto varies as it moves from x to y and then back to x. अच्छा जी, speed of Pluto किस तरह वेरी कर रही है as you are moving from x to y and then back to x. जब आप x से y जाओगे, your speed will decrease. When you will go from y to x, your speed will increase. Okay, so we can write here, जब आप x to y जा रहे हो आपकी स्पीड क्या करेगी? Decrease. जब आप y to x जा रहे हो, what will happen? Your speed increases. सर ऐसा क्यों हो रहा है? Because at position x you are closest to the sun. यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. जैसे जैसे आप सन से अवे जा रहे हो, your gravitational potential energy becomes maximum, kinetic energy becomes minimum, total energy का sum is constant. Explain how the speed of Pluto varies as it moves from x to y and back to x. So you will say from x to y, the speed of Pluto decreases. और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? From y to x, the speed of Pluto increases. Simple. Explain in terms of energy transfer why the speed of Pluto varies in this way. So you will say the total energy remains constant. पहले तो आप हमेशा टोटल एनर्जी की बात कर दिया करो, ठीक है? You will say the total energy, that is the sum of kinetic plus gravitational potential energy, remains constant. फिर आप लिखोगे at point x Pluto
has maximum kinetic energy and minimum gravitational potential energy. As it moves from x to y, the kinetic energy decreases and gravitational potential energy increases, causing the speed to decrease. और last point ये लिख दो. As it moves from y to x, जैसे ये y से x जा रहा है, क्या हो रहा है? The kinetic energy increases, gravitational potential energy decreases, and hence speed increases. Simple as that, nothing complicated here. कोई मसला है तो you can ask right away. Let's further move ahead. The average temperature on the surface of Pluto is 43. Convert this temperature to degree Celsius. Kelvin is equals to degree Celsius plus 273. 43 minus 273 is equals to degree Celsius. क्या आ जाएगा आंसर? हाँ जी, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -230 डिग्री सेंटीग्रेड. सिंपल. Pluto has a white surface as shown in figure 10.2. Okay. As Pluto rotates, the white surface alternately faces towards and away from the sun. White surface क्या कर रहा है? Alternately face कर रहा है towards and away from the sun. Explain how this affects the temperature of Pluto as it rotates on its own axis. बेटा white surfaces क्या होते हैं? Poor absorbers and poor emitters of heat. White surfaces क्या होते हैं? White surfaces are poor absorbers and poor emitters of heat. तो जब आपका white surface sun की तरफ फेस करेगा, there will be a lesser increase in temperature. So you can write it here. White surfaces. White surfaces are poor absorbers of heat when the white surface faces towards the sun. The increase in temperature is less. Is less. Simple, easy peasy. If you have any questions, you can ask right away.